Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we will do question answers and all the exercises of chapter A Visit to Jaipur. So let's start with hard words students. Let's read these hard words for correct pronunciation. First is culture, glimpse, tourist, palace, complex, beautiful, brilliant, honeycomb, processions, restaurant. Students, now let's write word meaning. Next is students, word meanings of this chapter. First is guide, person who takes tourists around. वो व्यक्ति जो यात्रियों को आसपास घुमाता है उसे कहते हैं गाइड. हनीकॉम्ब, बी हाइव, मधुमक्खियों का छत्ता. प्रोसेशंस, पीपल और व्हीकल्स मूविंग फॉरवर्ड इन अ क्यू. लोग या गाड़ियां जब आगे की तरफ एक लाइन में बढ़ते हैं, इसे आप जुलूस भी कह सकते. नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन गिवन ऑन पेज नंबर 39, एक्सरसाइज ए, वेयर सम फिलअप्स आर देयर. लेट्स डू इट. फर्स्ट, रिया वॉज मिसिंग. राजा. रिया एंटर्ड अंबर फोर्ट थ्रू द सूरज pole. So students, fill these words in the blank. Raja had joined Seven Oaks School in London. Third one, Riya's father wanted to take a road trip from New Delhi to Jaipur. The palace complex in the Amber Fort is divided into 4 sections. Now let's write students question answers. फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज रिया स्टे. रिया कहाँ रुकी थी? आंसर इज रिया स्टेड इन द टूरिस्ट लॉज रन बाय द राजस्थानी टूरिज्म बोर्ड. रिया टूरिस्ट लॉज में रुकी थी जो राजस्थान टूरिज्म बोर्ड के द्वारा चलाया जाता था. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द लोकल गाइड शो रिया एंड हर फैमिली. लोकल गाइड ने रिया और उसकी फैमिली को क्या दिखाया? Answer is the local guide showed the Amber Fort and told about its history. Local guide ने उन्हें अंबर फोर्ट दिखाया और उसके इतिहास के बारे में बताया. नंबर 3, Who had built the हवा महल. हवा महल किसने बनवाया था? What does it look like from the outside. वो बाहर से कैसा दिखता है? Answer is the हवा महल was built by महाराजा सवाई प्रताप सिंह इन 1799. हवा महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा 1799 में बनवाया गया था. इट लुक्स लाइक अ ब्यूटीफुल हनीकॉम्ब फ्रॉम आउटसाइड. वो बाहर से एक सुंदर से मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखता है. क्वेश्चन नंबर 4, Why was Riya in for a surprise at the restaurant? रिया रेस्टोरेंट में घुसते ही आश्चर्यचकित क्यों थी? आंसर इज रिया was in for a surprise because the food was served on silverware and there were royal interiors on the wall. रिया रेस्टोरेंट में घुसते ही आश्चर्यचकित हो गई क्योंकि जो खाना परोसा गया था वो चांदी के बर्तनों में था और उस रेस्टोरेंट की दीवारों पर रॉयल इंटीरियर्स थे, जैसे महलों में होती है ऐसी नक्काशी थी. क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट द थिंग्स रिया हैड फॉर लंच. उन चीज़ों के नाम लिखने हैं जो रिया ने लंच में खाया था. आंसर इज रिया हैड प्याज की कचौरी, गट्टे की सब्जी एंड बटर मिल्क फॉर लंच. रिया ने प्याज की कचौरी, गट्टे की सब्जी और लंच में लस्सी पिया था. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स डू नेक्स्ट एक्सरसाइज. स्टूडेंट्स, वोकैबुलरी सेक्शन गिवन ऑन पेज नंबर 40. क्रॉस आउट द ऑड वर्ड. जो सबसे अलग शब्द है उसको आपको क्रॉस करना है या आप उस पर सर्कल भी कर सकते हैं. फर्स्ट वन, फैब्रिक, एम्ब्रॉयडरी, मटीरियल, cloth. So here students, fabric, embroidery and cloth are interrelated. Odd one is material. तो यहाँ पर आप material को circle करेंगे. Adorn, decorate, beautify. These all are similar. Gold is metal, so you will circle here gold. Next, spot, venue, place. These are similar.
Odd one is jewelry. So circle or cross jewelry here. Next, tourist, monument, traveler, visitor. So here tourist, traveler and visitor are same. Monument you will cross. This is odd one. Next, connection, communication, contact and heritage. Here odd one is heritage. Next, culture, tradition, wildlife, history. So here students, the odd one is wildlife. So you will cross these words in this exercise. Next exercise is given on page number 41. Question is, fill in the blanks with the correct forms of the verbs. Blank is there and in bracket two words are there, two forms of verbs are there. You have to fill correct form of verb. I dash 2 kilometers yesterday. I walked 2 kilometers yesterday. He dashed the old man after the accident. He helped. Next, earth dash around the sun. Earth moves around the sun. My grandmother dashed to our uncle's house last Sunday. Went. Next, we dash a film yesterday. We watched a film yesterday. She dash her car every weekend. She washes her car every weekend. Write PR for sentences in the simple present tense. Write P for sentences in the simple past tense. वो सेंटेंस जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसके आगे आपको PR लिखना है और वो सेंटेंस जो सिंपल पास्ट टेंस में है उसके आगे आपको P लिखना है. सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है स्टूडेंट? सिंपल प्रेजेंट टेंस मीन्स वो एक्शन जो आप रोज हैबिट में करते हैं या जिसे आप अभी कर रहे हैं वो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस. और सिंपल पास्ट क्या है? वो एक्शन जो आप कर चुके हैं. सो स्टूडेंट्स लेट्स डू इट. फर्स्ट इज अमित एंड रितम प्ले क्रिकेट एवरी संडे. वो हर संडे को क्रिकेट खेलते हैं. दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. आई लव वनीला आइसक्रीम. मैं वनीला आइसक्रीम पसंद करता हूँ. This is also simple present tense. The thirsty bird drank water from the lake. Thirsty प्यासी चिड़िया ने लेक से पानी पिया. So students, this is past tense. The word drank tells you that this action happened in the past. Kajal lives in Mumbai. This is also simple present tense. The snake hissed angrily at the mongoose. So here students, hissed verb is in the past tense, so you will write P here. This is simple past tense. Shikha sings for 2 hours every day. For every 2 hours she sings. This is simple present tense, so write PR. So students, next we are going to do punctuation exercise given on page number 42. Now here what you have to do, here you can see the sentence in comma is exact quotation of somebody. So speaker has quoted these words. ये sentence speaker के द्वारा as it is कहे गए हैं जिन्हें यहाँ लिखा गया है. Now you have to put a comma before the speaker's words. So here my mother said I am going to the market. So here what is the quoted sentence? I am going to the market. You have to put a comma before the quoted sentence. So put comma here. A man shouted, get out of that building. This is quoted sentence here students. So put comma before the quoted sentence. The postman said, I have a package for you. So these are quoted words of postman. So students, put comma before the quoted words. So put comma here after said. He wrote, the weather here is very pleasant. Again this is the quoted sentence which is in the inverted comma. So put a comma before the speaker's exact words. So put comma after wrote. Isha said, let's have some cake. Students, this is quotation here again. So put comma before the exact quoted words. So in this way I have put comma with red color before the exact words of the speaker. In this way you will put comma here. Next is students, my word bank, last exercise of this chapter. Write the synonyms for these words. जो words दिए हैं आपको उनके synonyms लिखने हैं. Synonyms means the words which have same meanings. So first is large.
You can write huge. Second, patterns. You can write arrangements. Third word is mild. So you can write moderate. Next is royal. Here you can write imperial. So students, in this way you will complete this exercise. Now that's all for today. We have completed hard words, word meanings, question answers and all the book exercises of this chapter. I hope you like my way of teaching. If you like it, students, press on like button. You can write your views in the comment section and don't forget to subscribe my channel. We'll meet again with another video. Till then, bye bye. Have a good day, children.